Now, coming to the session. Today, I'm starting with a new poem, and this poem is very difficult. Beforehand, I'm telling you the poem is difficult. The poem is bit philosophical. What is the meaning of philosophy? Means based on certain principles. जैसे हम लोगों ने पहला पोएम किया था डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड पोएम किया था फायर एंड आइस, एंड थर्ड पोएम हम लोगों ने किया था दैट वाज हाउ टू टेल आई थिंक टाइगर इन द zoo. This poem is little bit about learning things, and the name of the poem is the ball poem. ये पोएम जब से मैंने पढ़ा है, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच. The poem is all about a boy. यहाँ पर वो जो बॉय है, he is playing with his ball. He is dribbling his ball. And ये जो बॉल है, suddenly the ball falls down in the water. वो जाकर पानी में गिर जाता है. Now ये जो बच्चा है, पहले जब वो देखता है कि उसका इतना पुराना खिलौना पानी में गिर गया, he is very much upset. बहुत दुखी हो जाता है वो. Then he is gripped with fear, sorrow. वो एकदम से मतलब कि डर भी जाता है, दुखी हो जाता है. He looks at the ball. He feels helpless. जो पोएट है जॉन बेरीमैन, वो he is passing by. वो वहां से गुजर रहा है. तो पहले तो उसे लगता है कि ही वुड कंसोल द चाइल्ड. नॉर्मली हम बच्चों को यही बोलते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, अगर गुम गई तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ला देंगे. बट देन ही डज नॉट कंसोल हिम. वो उसको नहीं समझाता. उसको लगता है कि इस बच्चे को ये जो बॉल है इसे संभालना आना चाहिए. ही शुड नो हाउ टू मेंटेन द थिंग्स. चीजें अगर हमारे पास है तो उनको रखना हमें आना चाहिए. यहाँ जो बॉल्स है क्लास 10, इट्स नॉट द बॉल दैट वी आर प्लेइंग. दिस इज अबाउट एवरीथिंग वी हैव. हमारा घर, हमारे खिलौने, हमारी चीजें. एंड इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में लोग आपसे छीनेंगे. बच्चों की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है. द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, इट्स वेरी नाइस, बट द वर्ल्ड ऑफ एल्डर्स आर वेरी इट्स वेरी हार्श. होता है, बट उसको आना चाहिए. ही शुड नो, एंड ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू ओवरकम द ग्रीफ. उसको ये भी समझ आना चाहिए कि वो ऐसे दुखी जब होता है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है, तो उसे कैसे उस चीज को संभालना चाहिए. हाउ ही शुड बी एबल टू मेंटेन दैट. एंड दैट इज व्हाई ही डजंट इंट्रूड. वो उसको कुछ नहीं कहता है. द पोएम एंड्स विद द वर्ड दैट everyone in this world, हम सबको, आपको, मुझे, everyone should know how to overcome the grief that comes over. So that is the poem, the ball poem. The poem has many poetic devices. It has anaphora, it has transferred epithet, it has alliteration, metaphor, assonance, and the poem has a deeper meaning that one must understand the meaning of loss, and we must also
understand how to come out of that loss. So that is the chapter, that is a poem, the ball poem written by John Berryman. I would be giving this lecture for the poem along with NCRT. Then once we have completed, then I'll be explaining you the poetic devices. So you can all be always ready with your pen so that you are able to, note down the same. Here, the ball is not only the ball which he is having, it's also the symbol of the innocence. It is also the symbol of the things that we have in our childhood. जैसे मैंने आपको बताया, बचपन बड़ा अच्छा होता है. Once you enter into the adult's life, then you will understand कि how hatred, कितना, मतलब the people, how they treat each other. The boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much nor is difficult to buy another. When why the boy is so upset? What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? मतलब वो क्या कर रहा है? What is he to do? मतलब क्या करेगा? What he will do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. जो I है, it has been used for the poet. He says मेरे सामने के सामने ही the boy was dribbling the ball, bouncing मतलब it was dribbling, वो उसको dribble कर रहा था, and then while playing, even though he was happy, it suddenly went into the water. Now we don't know what is the water here about. It might be a harbor, कोई harbor होगा, कोई water body होगी, we don't know exactly, we don't know, but there was something जिसके अंदर वो चला गया. No use to say, oh, there are other balls. This comes in the exam. What does it mean? मतलब ये बोलना जो है, it doesn't have any relevance. कोई बात नहीं, दूसरे बॉल्स हैं. He does not want to console. He does not want to console. वो उसको कंसोल नहीं करना चाहता है, वो उसको नहीं समझाना चाहता है. An ultimate shaking grief fixes the boy. जो बच्चा है वो एकदम दुखी हो जाता है. He is not able to control himself. Shaking मतलब वो हिल रहा है, मतलब वो इतना रो नहीं रहा, लेकिन he is feeling literally very bad as he stands rigid, trembling, staring down. वो देख रहा है नीचे की तरफ. He isn't able to understand what to do. All his young days. Now, this young days here is also referring to his childhood. It is also referring to the ball which has been there with him since he was a child. यहाँ पर ये जो all his young days है, it is also referring to his childhood and also to the ball which was there with him since he was a child. Into the harbor. Now harbor is the water body जिसमें वो मतलब कि बॉल चला गया. I would not intrude on him. Intrude मतलब उसको तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसको समझाएगा. इंट्रूड मतलब होता है विदाउट एनी परमिशन घुसना.
ही सेज आई विल नॉट इंटरफेयर, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा. अ डाइम, डाइम इज अ करेंसी, एक पैसा. अनदर बॉल इज वर्थ, ऐसा कहना, अरे एक 10 पैसे का तो है, इट्स ओके, दिस इज ऑफ नो मीनिंग. वाई, वाई ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए? Now he senses his first responsibility in a world of possessions. अब उसको अपनी responsibility समझ आ रही है इस world of possessions, मतलब the world where we are possessed with so many things. We have the ball, we have the bat, we have the home, we have the car, we have this much. But we need to understand कि इन चीजों को संभाल के रखना है. We need to be responsible. People will take balls. Balls will be lost always. भाई कभी आपसे गुम जाएगा तो कभी लोग आपसे छीन लेंगे. यहाँ पर द बॉल्स आर सिंबलाइजिंग, दे आर, यहाँ पे सिंबल्स हैं. दे आर द सिंबलाइजिंग, सिंबलिज्म फॉर थिंग्स, फॉर मेमोरीज, फॉर अवर एक्शंस. लोग हमें, हमसे छीनेंगे, चीजें गुम जाएंगी हमसे. लिटिल बॉय, मतलब वो बोल रहा है भाई लोग तो चीजें लेंगे. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. आप फिजिकल बॉल को ला सकते हो. कैन यू ब्रिंग द मेमोरीज? कैन यू ब्रिंग द मेमोरीज which are associated with that ball? No. You can bring the things which are in possession, you cannot bring the memories that are associated with that. आप चीजें ला सकते हो, चीजों के से जुड़े हुए यादें, उनसे जुड़े हुए जो प्रीशियस मोमेंट्स है ना, वो आप नहीं ला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बाय वन मोर this kind of what we call as kanda silk. It's easy, but can I bring those memories which I have with this? The love, the gesture that I got with this, is it possible? No. तो यहाँ पर उसका मतलब है नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब यू कैन बाय द थिंग्स बट नॉट द मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट. उसके साथ जो यादें हैं आप उसको लेकर नहीं आ सकते. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज एक्सटर्नल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लास 10. मनी इज एक्सटर्नल मतलब आप एक्सटर्नल चीजें खरीद सकते हो, not the internal. As I said, you can buy, you can buy the materials, but you cannot. पैसों से तो आप सामान खरीदोगे ना, उससे जुड़ी हुई चीजें तो नहीं खरीद सकते हो आप, उससे जुड़े हुए यादें तो नहीं खरीद सकते हो. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, one of the most repeated. He is learning well behind his desperate eyes. यहाँ पर जो ये desperate eyes है, this is transferred epithet. बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वो अपने इस दुख के पीछे, he is understanding. epistemology मतलब the knowledge. epistemology का मतलब है the knowledge of loss. हाउ टू स्टैंड अप, मतलब विद दिस लॉस, इस लॉस के साथ वो अपने लॉस को कैसे ओवरकम करना ये सीख रहा है. वो इस लॉस के साथ ये सीख रहा है कि ही नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वही जो हर एक इंसान को जानना चाहिए. लॉस इज इनएविटेबल, सबसे गुमता है.
but how to be responsible and how to overcome is more important. And most know how many days how to stand up, and most of the people they learn, और ये इस बच्चे को भी इसी चीज को लर्न करना है. So that is the poem, the ball poem. Once again, I'm repeating class 10 before we move to the next session, that is the poetic devices. This is about a boy who was playing with his ball. Suddenly, his ball went into the water stream, and the poet who was standing there, जो वहां खड़ा था, उसने देखा, उसने अपने सामने उस बॉल को पानी में गिरते हुए देखा. 1 मिनट के लिए तो उसको लगा कि वो उसको बोले कि कोई बात नहीं और बॉल्स आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला. उसने देखा कि वो जो बच्चा है ही इज ग्रीफ स्टिकन. उसके सारे बचपन की यादें, उसका सारा जो मतलब कि उसके साथ जितनी जुड़ी चीजें थी सब कुछ पानी में चला गया. ही वॉज हेल्पलेस, बट द पोएट डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर. उसको लगा ये बात बोलना, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब ये बात बोलना कि भाई 10 पैसे की कोई बात नहीं दूसरी बॉल आ जाएगी, नहीं. Because the child will now sense his first responsibility in a world of possessions. अब वो बच्चे को समझ आएगा that इस दुनिया में जहां लोगों की जो वैल्यू है ना, it is not with the thing, with your qualities, it is with the things that you have, and one must have the responsibilities of keeping those things intact. उन चीजों को संभाल के रखना हमें आना चाहिए. People will take balls, balls will be lost always. लोग तो balls को भी लेंगे and balls हमसे गुम भी जाएंगे, दोनों होगा. कभी कोई छीनेगा तो कभी हम गुमा देंगे. Money is external, we can get those balls once again, we can get all those things once again, but can we get the memories associated with that? No. So the boy will learn. ये जो बच्चा है वो लर्न करेगा कि what is the epistemology, मतलब the knowledge कि how should we sense our responsibility, and also how we should overcome our, कभी दुख होता है तो how to overcome, दोनों चीजें वो सीखेगा, which every man has to learn, and which every man even learns with the time. So this is the poem, the ball poem. As I said, it is a philosophical poem. So you need to understand the philosophy. मतलब इसके पीछे क्या है? Written by John Berryman. So now let us come to the poetic devices. The poem doesn't have any rhyme scheme. It's written in a free verse. This is the very first. We don't have any rhyme scheme. A B B kuch nahi hai. It is written in a free verse. Now let us come to one by one all the poetic devices. Here you can see what is repeated in the consecutive line. मतलब अगले अगले line में वो repeated है. So this we call as anaphora. The word what is repeated. But अगर यही चीज सिर्फ ये वाली लाइन आ जाए, आपकी ऊपर वाली लाइन ना आए, सिर्फ
यही लाइन आ जाए और इसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इनमें, तो देन इट इज repetition. Then I saw it go merrily bouncing down the street. Now, ball is not a human. Ball is not a human. But here it has been shown as if the ball is moving like a human, so it is personification. This is a board's question. ये board में आया था. I saw it go merrily bouncing. So it is personification. Then rigid, trembling, staring. If you see the letter, the vowel I is repeated. So it is assonance. All his young days. All his young days. This is actually what we say. Metaphor. Then balls, balls, repetition. No one buys a ball back. Buys ball back. Electrician. His desperate eyes. Now it is an emotion. It is an emotion कि उस छोटे से बच्चे की जो दुख था उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था. So these are some of the important what you call as poetic devices: anaphora, assonance, repetition, personification, alliteration, and also the ball is symbol. So it is a symbolism. It is a symbolism. If you see, in between there is no apostrophe, or what we call as there is no within the lines there is no punctuation. So there is like go, then, और उसी तरीके से down, where, now, responsibility, take. There is no comma, there is no full stop. So this is called as enjambment. So these are the poetic devices we are having in this poem. So that is anaphora, personification, assonance, metaphor, repetition, alliteration, and symbolism. Sorry, transferred epithet, symbolism. At the same time, we also have enjambment. So that's a poem
द बॉल पोयम।